ये छोड़ देंगे। बेसन का मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हम इसमें बूरा मिलाएंगे। बूरा आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। बूरा को थोड़ा मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू, बादाम, इलायची पाउडर और थोड़ी सी और बूरा डालेंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। हाथ में बेसन का मिक्सचर लेंगे और अच्छे से दबाकर लड्डू बनाना है। लड्डू को हम पिस्ता के पाउडर से गार्निश करेंगे। लड्डू तैयार है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।